Very good evening, all the participants. So, let us see some of the illustrations based on business laws, particularly Companies Act. So, in Companies Act, there are specific chapters. You don't have to read the entire Companies Act. So, there are chapters, chapter 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 17, 18, 20, then 27, 28, 29. So, these are the only chapters you have to read. So, what we have done is, we have made questions on each and every chapter. And we have tried to cover not only each chapter, but each section also. Like, it starts with chapter 3. The first chapter to be read is chapter 3. So, if we read chapter 3, so then this is the case study based on section 3. So, you will have some questions based on section 3. These are the questions. So, let us read some of the chapters. Let us, and the answer sheet also I have given it to you. So, you will note down your answers side by side and then we will compare it. First question. What are the matters to be stated in the prospectus issued by a company? So, what are the matters to be stated in the prospectus issued by a company? Sir, please read the option also. Options are, first option is such information and such reports on financial information. You please open chapter 3 also. Chapter 3 of the book. So if you read chapter 3, for it. Chapter 3 will start with this 26. This question is based on section 26. So what it says, matters to be stated in the prospectus. So let us open section 26 also side by side, because this question is based on section 26. So let me open my website also. New share. So this is the screen. I hope my website is visible to you now. Is it visible? Yes, sir. So you go to Knowledge Bank, and then you go to Acts, and then you go to Corporate Laws, Companies Act. In Companies Act, you go to chapter 3. In chapter 3, you will find here matters to be stated in the prospectus. So these are the matters to be stated in the prospectus. I hope the screen is visible. So it says every prospectus issued by or on behalf of a public company, either with reference to its formation or subsequently, or by or on behalf of any person who is or has been engaged or interested in formation of a public company, shall be dated and signed, and shall state such information and set out such reports on financial information as may be specified by the Securities and Exchange Board in consultation with the central government, provided that until the Securities Exchange Board specifies the information, the regulations made by the Securities and Exchange Board under the Securities and Exchange Board of India Act in respect of such financial information or reports on such financial information shall apply. So basically, it is referring you to SEBI Act and SEBI regulations.
inserted by the Companies Amendment Act 2017. And then it will take you to Companies Amendment Act 2017. So this is the Amendment Act. इस तरह से लंबा चौड़ा जाना पड़ेगा आपको। तो अब इसमें लिख देखते हैं, यहाँ चलते हैं। अब अगर 26 से पढ़ते हैं आप, तो क्या कर रहा है ये, आपको कहाँ ले जा रहा है? आपको ले जा रहा है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में। So first thing is such information and such reports on financial information as may be specified by the SEBI in consultation with the central government. Declaration about the compliance of the provisions of this act and a statement to the effect that nothing in the prospectus is contrary to the provisions of this act. And delivery to the registrar for filing a copy thereof signed by every person who is named therein as a director or proposed director of the company or by his authorized attorney on or before the date of its publication. And D is all of the above. So what is the option? More valuable than all of finance, all of the section 26. So it is more far more valuable to fail him than to cheat. So option will be all of the above. बेसिकली द इंटेंट इस तरह से आप प्रोस्पेक्टस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन याद भी हो जाएगी कि भाई क्या करना है। सबसे पहले तो ये है कि वट एवर इन्फॉर्मेशन इज स्पेसिफाइड बाय सेबी दैट यू हैव टू गिव, देन यू हैव टू गिव ए डिक्लेरेशन अबाउट द कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजंस, एंड देन you have to deliver it to the registrar for filing a copy thereof. And who has to sign this copy? Every person who is named therein as a director or proposed director of the company or by his authorized attorney on or before the date of its publication. It shall be necessary to specify in an advertisement of any prospectus of the company. So this question is based on section 30. So section 30, if you see, talks of advertisement of prospectus. So what it says, section 30 says, where an advertisement of any prospectus of a company is published in any manner, it shall be necessary to specify therein the contents of its memorandum as regards the objects, the liability of members, and the amount of share capital of the company, and the names of the signatories to the memorandum, and the number of shares subscribed by them and its capital structure. So the answer is all of the above. So all this information you have to give. These are very simple illustrations, but it will help you in memorizing section 30 because they may frame the questions otherwise. So they will say which of the information is not necessary to be specified in an advertisement for prospectus, and they may include some other thing also besides these. But these are the things which are to be given in an advertisement of any prospectus of a company. And this is given in section 30. The amount payable on application on every security shall not be less than 5%, 8%, 10%, such other percentage or amount as may be specified by the SEBI. So this question is based on section 39, subsection 2. Section 39, subsection 2 says that the amount payable on application on every security shall not be less than 5% of the nominal value of the security or such other percentage or amount as may be specified by the Securities and Exchange Board by making regulations in this behalf.
So answer is option A and D. A and D are correct. So A option is the correct option. Next question is based on section 39 subsection 1. Section 39 subsection 1 if we read, मैं बार बार वहां जा नहीं रहा वेबसाइट पर, वहां जाएंगे बार बार और टाइम वेस्ट होगा, तो आप अपनी कंपनी से खोल लीजिए या मेरी साइट खोल लीजिए जैसे आपको ठीक लगे. 39.1 क्या बोलता है? नो अलॉटमेंट ऑफ एनी सिक्योरिटीज ऑफ ए कंपनी offered to the public for subscription shall be made unless the amount stated in the prospectus as the minimum amount has been subscribed and the sum payable on application for the amount so stated have been paid to and received by the company by check or other instrument. So the answer will be C. Both A and B. Both the conditions have to be satisfied. Next question is based on section 39 subsection 4. Section 39 subsection 4 if you read, whenever a company having a share capital makes any allotment of securities, it shall file with the registrar a return of allotment in such manner as may be prescribed. So filing with the registrar a return of allotment is mandatory. Mandatory. In case of default, so this question is based on section 39 subsection 5, and if we read section 39 subsection 5, it says in case of any default under subsection 3 or subsection 4, the company and its officer who is in default shall be liable to a penalty for each default of 1000 rupees for each day during which such default continues, or 1 lakh rupees, whichever is less. So the option will be A. Now answer the following questions on the basis of the above case study. Is the minimum amount payable on application in the above case study is justified? So what is the minimum amount payable on application? 5%. 5%. Or the amount which the SEBI may prescribe. है ना? So can the company make allotment of shares to the general public? Yes, sir. Yes, कोई इशू नहीं है. तो दिस इज दी, ये आंसर है इसके. इस तरह से आपको सारा कंपनी एक्ट पूरा का पूरा कवर कर लेना है. अब हम चैप्टर 4 पर चलते हैं. चैप्टर 4 है शेयर कैपिटल का. लेट अस क्विकली सी व्हाट आर द क्वेश्चंस और फिर इसमें किस तरह से किया. ये श्री गणपति ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज इज ए पब्लिक कंपनी हैविंग इट्स हेड ऑफिस इन मुंबई with an authorized share capital of 10 crore divided into 10 lakh shares of rupees 100 each. अब आपको चैप्टर 4 खोल लेना है अपने बुक में, ठीक है. चैप्टर 4 आपका है सेक्शन 43. The paid up share capital of the company is divided into two parts. Equity share capital है और preference share capital है. In the year 2022, due to positive funds for research and development, the company decided to issue 10,000 equity shares of rupees 100 each to the general public at a premium of rupees 10. The issue was fully subscribed and paid up. The relevant share certificates were issued following the provisions of the relevant section in this regard. The amount received on account of premium on these shares is adequately transferred to the securities premium account following the relevant provisions in this regard. Okay? So they are telling us a story that the paid up capital is equity capital and preference share capital. Then they decided to issue 10,000 equity shares. 4,90,000 were already issued and now they have issued 10,000 equity shares. 100 each at a premium of rupees 10. And it was fully subscribed and paid up, and share certificates were also issued, and the amount received on account of premium, it was transferred to securities premium account. Now let us see the questions that follow. Section is 43. So how many types of share capital a public limited company can have? 2 types, sir. Only 2 types. Equity.
Option is B. Equity capital and preference share. Preference share capital. Right. By whom the certificate of shares issued under the common seal of the company should be signed? Who will sign the share certificates? Sir, This, 2 directors and company secretary. this is given in section 46. Section 46, subsection 1. A certificate issued under the common seal, if any, of the company or signed by 2 directors or by a director and the company secretary. Okay? Wherever the company has appointed a company secretary, specifying the shares held by any person shall be prima facie evidence. So, what will be the answer? Answer will be B. B होगा ना? Yes, sir. Two क्या एक directors डायरेक्टर or साइन कर दें या एक डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी साइन? तो आइदर ए और बी हो जाएगा इसमें आंसर, है ना? आंसर ई हो जाएगा. 2 डायरेक्टर भी तो साइन कर सकते हैं ना. लिखा है सर्टिफिकेट of the company issued under the common seal, if any, of the company or signed by 2 directors or by a director and the company secretary. An equity shareholder have a voting right on. Equity shareholder का right किस कौन-कौन सी resolutions पर होगा? This is given in section 47(1). So section 47(1) says all resolutions, sir. every member of a company limited by shares and holding equity share capital shall have a right to All resolution placed before the company. on every resolution placed before the company. Now a preference shareholder have a voting right on. Preference shareholders का किस पर voting right होता है? This is given in section 47 subsection 2. Which directly affects their. Sir, They have a E, right to vote all only on resolution is divided resolutions on which directly affect the rights attached to his preference shares and any resolution for the winding up of the company or for the repayment or reduction of its equity or preference share capital. So these are the types of resolutions on which they have right to vote. Okay? Number 1, which directly affect their interest. Second is any resolution for the winding up of the company or the repayment or reduction of its equity share capital. Provided that the proportion of the voting rights of equity shareholders to voting rights of preference shareholders shall be in the same proportion. ये इसके लिए इसका प्रोवाइजो भी देख लीजिए. हाँ, प्रोवाइजो भी है. सेकंड प्रोवाइजो है. सेकंड प्रोवाइजो है, बहुत इंपॉर्टेंट है. Yes, where the dividend in respect of a class of preference shares has not been paid for a period of 2 years or more, such class of preference shareholders have a right to vote on all the resolutions placed before the company. तो पहला वाला ये तो ऑप्शन ठीक हो गया, ये ऑप्शन सही है. रेजोल्यूशन फॉर वाइंडिंग अप ये भी ठीक है. रेजोल्यूशन फॉर द रीपेमेंट ये भी ठीक है. सी और डी क्या सर? रेजोल्यूशन फॉर रिडक्शन ऑफ द कंपनीज ये भी ठीक है. एंड ऑल रेजोल्यूशन इफ डिविडेंड. तो ऑप्शन हो जाएगा एफ. आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव. The idea is to remember the provisions. The idea is not to just answer but to remember the provisions. किसी तरह से भी सवाल पूछ ले बट पहले एक बेसिक प्रोविजन तो कम से कम याद हो जाए ना आपको. Now section 52. Section 52 में क्या बोलता है? Section 52 talks of application of premium received on issue of shares. ठीक है? तो you know whatever is the premium received that is credited to securities premium account and that may be utilized for specified purposes. क्या क्या specified purposes हैं? This is given in section 52. So where a company issues shares at a premium, whether for cash or otherwise, a sum equal to the aggregate amount of the premium received on those shares shall be transferred to a securities premium account. And the securities premium account may be applied by the company towards the issue of unissued shares of the company to the members of the company as fully paid bonus shares, in writing of the preliminary expenses of the company, in writing of the expenses of or commission paid or discount allowed on any issue of shares or debentures of the company, in providing for the premium payable on the redemption of any redeemable preference shares or of any debentures of the company, for the purchase of its own shares
or other securities under section 68. So Will be for all these purposes, this securities premium account may be utilized. तो ऑप्शन F हो जाएगा इसमें. चैप्टर 3 देखते हैं अलॉटमेंट के ऊपर. इसमें सेक्शन 42 एक बार खोल लीजिए. सेक्शन 42. सेक्शन 42 टॉक्स ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट. ठीक है, तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट के ऊपर है. देखते हैं क्या क्वेश्चन है. दिस इज द क्वेश्चन. श्री गणेश इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज ए पब्लिक कंपनी एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स. ठीक है, रेफ्रिजरेटर, टीवी, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा. They decided to raise the funds by issuing the securities to the general public. ठीक है, और company issued 1 lakh shares of rupees 100 each to the general public. Amount is add as under: 10 on application, 30 on allotment, 25 on first call and 35 on final call. The company received applications for 97,000 shares. ठीक है, 1 lakh के अगेंस्ट में 97,000 की एप्लीकेशन आई इन टोटल, आउट ऑफ विच applications claiming 5,000 shares were rejected due to their not being in accordance with the company rules and regulations. The remaining 92,000 shares were subscribed in full to the public and a sum of rupees 8,92,000 were received as application money so far. ठीक है, क्योंकि आपको 92,000 में कितना मिलना था, आपको मिलना था 9,20,000. तो 9,20,000 के बजाय आपको मिला 8,92,000. सपोज चेक बाउंस हो गया या कुछ भी हो गया. ठीक है, नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर दीज क्वेश्चंस. ये आपका सेक्शन 42. how the sum of 892 received as application money to be kept. ये जो आपको 8,92,000 मिल गया, कहाँ रखना है आपको? So section 42 answers this question. Sir, in a separate bank account. हाँ, And 52.6. 42.6, sorry, 42. 42 में लिखा है, it shall allot its securities within 60 days from the date of receipt of the application money for such securities. तो 60 days के अंदर allot करनी. And if the company is not able to allot the securities within that period, it shall repay the application money, provided that money received on application under this section shall be kept in a separate bank account in a scheduled bank and shall not be utilized for any purpose other than. So these are the purposes for which they may be utilized: for adjustment against allotment of securities, or for the repayment of monies where the company is unable to allot the securities. तो आंसर क्या होगा इसमें? पहला वाला तो ठीक है, इट शैल बी केप्ट इन ए सेपरेट बैंक अकाउंट. दूसरा भी ठीक है, शैल बी यूटिलाइज फॉर एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज. सर एच होगा, एच. क्यों? सी ठीक है पॉइंट. ठीक है ना सर? सर ए और डी तो ठीक ही है ना? नहीं, ए और बी तो ठीक है. सी और पॉइंट डी ठीक है, तो सर ए की ऑप्शन समझ रही है ना? ए और सी ठीक है सर. सी नहीं, बी. बी ठीक है, तो फिर वही हाँ. ए की ऑप्शन बची ना सर, एच की. क्यों? ई भी तो हो सकती है. थोड़ी चीटिंग कर ली सर मैंने. रीपेमेंट में क्या होगा? फॉर द रीपेमेंट ऑफ मनीज.
सर अगर 60 दिन के ऊपर हो गए तो वापस देना पड़ेगा ना? हाँ, 60 दिन के अंदर हो तो वापस देना पड़ेगा, बिल्कुल। And that too also with 12% interest. within 15 इसका days. आंसर देखते हैं एक बार क्या बोलता है। इसका आंसर है जी, फर्स्ट का आंसर, ओनली ए, सी एंड डी। यानी बी नहीं, ही नहीं है। बी रॉन्ग है क्या? हाँ, Yeah, without permission, they cannot adjust the money, sir. and shall not be utilized for any purpose other than for adjustment against allotment of securities. Permission is required. अदर देन लिखा है ना, अदर देन, तो दैट मीन्स बी शुड बी आउट। नहीं, लिखता है shall not be utilized for any हाँ, purpose तो other बी than। बी 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 शुड बी आउट ऑफ द रेस। गलत है, बी लिखा है वो, अगेंस्ट अलॉटमेंट लिखा है। और सी वाला पॉइंट कहाँ लिखा है? shall be utilized for adjustment। where the Stock securities exchange, have been stock permitted to be dealt with in stock exchange। सर ये बोल रहा है कि जिसकी आपने स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन ली है, सेबी से परमिशन लिया, आप उन्हीं सिक्योरिटीज में डील कर सकते हो इस अमाउंट से सिर्फ। लेकिन ये 42 में कहाँ है वो? सर ये इन कंजंक्शन विद सेक्शन 62 पढ़ना पड़ेगा। ओके, चलो इसको देख लें बाद। अब अगला देखते हैं। इफ डिफॉल्ट, ये सेक्शन 40 सब सेक्शन 5 के ऊपर है क्वेश्चन। सेक्शन 40 खोलते हैं एक बार। सेक्शन 40 सब सेक्शन 5 क्या बोलता है? सेक्शन 40 सब सेक्शन 5 बोलता है इफ ए डिफॉल्ट इज मेड इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, दैट मीन सेक्शन 40। और सेक्शन 40 क्या है? सेक्शन 40 टॉक्स ऑफ सिक्योरिटीज टू बी डेल्ट विद इन स्टॉक एक्सचेंज। वो सेक्शन 40 सब सेक्शन 1 के अंदर था वो। अच्छा, तो सेक्शन 40 सबसेक्शन 5 बोलता है इफ ए डिफॉल्ट इज मेड इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन द कंपनी शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन which shall not be less than 5 lakh rupees but which may extend to 50 lakh rupees, and every officer of the company, so 5 lakh to 50 lakhs, and every officer of the company who is in default shall be punishable with fine which shall not be less than 50,000 rupees but which may extend to 3 lakh rupees. A In option. options. So 5 lakh to 50 lakh on company, and on officer 50,000 to 3 lakhs. Option will be A, sir. Option will be A because it is talking of company, punishment on company. So punishment on company is 5 lakhs to 50 lakhs. Section 40 subsection 5 on officer. On officer it is 50,000 to 3 lakhs. Yeah. है ना? Second option. It is necessary for a company making any public offer to make an application. Now this is based on section 40 subsection 1. It is necessary for a company making a public offer to make an application to one or more recognized stock exchange or exchanges and obtain permission for the securities to be dealt with in such stock exchange or exchanges. Yes, sir. Very true. ये प्रीवियस जो है ना, उसमें ये लिखा है, ये एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज का नंबर 3 निकालिए, 3 नंबर। सर सी ट्रू। ये क्वेश्चन नंबर 3 निकालिए। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ, इससे पहले वाला जो ऊपर इसकी बात कर रहे थे सी 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 जो लिखा है ना यहाँ पे, हाँ। दिस इज मेंट फॉर पब्लिक ऑफर, नॉट फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट। सी, चलो ये हो गया। अच्छा, अब
इसके आंसर्स ये है, फोर्थ का सी, ठीक है। अब चलते हैं चैप्टर 3, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज में देखते हैं, ये सेक्शन 42 के ऊपर बेस्ड है। तो सेक्शन 42 खोल लेते हैं एक बारी। और गणपति विनायक मेडिसिन इज ए प्राइवेट कंपनी एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन, और ये इस तरह से इशू करते हैं, ठीक है। 10 persons to whom offer for private placement has been made renounced their offer in favor of another person, ठीक है। 10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना फेवर रिनाउंस कर दिया। The offer was subscribed in full. The prospectus issued by the company, और ये ध्यान रखना कि ये प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड नहीं है। The prospectus issued by the company included a misstatement regarding the financial position of the company and thereby misleading the persons intended to invest in the company about the true financial position of the company. You are required to answer based on the relevant provisions. पहला, how many number of persons may be issued a private placement of securities by a private company? तो प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट प्लेसमेंट कितने लोगों को हो सकता है? 50%, sir. यस। क्या बोलता है? A private placement shall be made only to a select group of persons who have been identified by the board, hereinafter referred to as identified persons, whose number shall not exceed 50 or such higher number as may be prescribed, excluding the qualified institutional buyers and employees of the company being offered securities under a scheme of employee stock option in terms of provisions. So basically, ESOP is excluded and qualified institutional buyers are excluded. तो क्या ऑप्शन हो जाएगा इसमें? 50 or such higher number as may be prescribed. तो सी हो जाएगा ऑप्शन इसका, है ना? आंसर विल बी सी, 42 subsection 2. A person to whom a private placement of securities has been made may renounce its share in favor of another person. तो रिनाउंस हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है, sir. They don't have right to बिल्कुल। renunciate. There is a proviso after subsection 3, provided that the private placement offer and application shall not carry any right of renunciation. तो right of renunciation करेगा तो 50 से ज्यादा हो गया ना, फिर तो पब्लिक के लिए हो गया किस्म से। भाई 50 को कर दिया, 50 ने दूसरे 50 को दे दिया, ऐसे पब्लिक में चला जाएगा, तो ये renunciation हो ही नहीं सकता। ये क्या renunciation? Renunciation मतलब अपना ऑफर दूसरे को दे दो। अच्छा, सपोज यू रिनाउंस योर ऑफर इन फेवर ऑफ समबडी एल्स, ए कंपनी ने ए को दिया, ए ने अपना रिनाउंस कर दिया बी के फेवर में, ओके। तो इट इज नॉट पॉसिबल। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर एंड एप्लीकेशन शेल नॉट कैरी एनी राइट ऑफ रिनाउंसिएशन। तो यहां पर लिखा था ना कि 10 लोगों ने अपना रिनाउंस कर दिया, तो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट अलाउड। नाउ इफ ए कंपनी डिफॉल्ट्स इन फाइलिंग द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, ये 42 सबसेक्शन 9 बोलता है इसके बारे में। 42 subsection 9 क्या कहता है? If a company defaults in filing the return of allotment within the period prescribed under subsection 8, और period prescribed कितना है? Return of allotment आपको देनी है within 15 days from the date of the allotment, ठीक है? And if you default, then the company, its promoters and directors shall be liable to a penalty for each default of 1,000 rupees for each day during which such default continues, but not exceeding 25 lakh rupees. ठीक, तो आंसर प्राइवेट कंपनी फॉर्म होने के बाद प्रमोटर स्टिल प्ले अ रोल। किसका? प्राइवेट कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, ड्यूली इनकॉर्पोरेटेड, हाँ, तो प्रमोटर का रोल रहता है उसके बाद में, इनकॉर्पोरेशन के बाद। भाई देखो ऐसा होता ना कि नॉर्मली यू कैनॉट होल्ड एवरीबॉडी रिस्पॉन्सिबल, तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगती है। जो भी पेनल्टी प्रोविजंस आपको आइडेंटिफाई तो करेंगे ना, वो क्या किसको आइडेंटिफाई किया? प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स को। बेसिकली क्या लिखा है इसने? कंपनी, इट्स प्रोमोटर्स एंड डायरेक्टर्स शैल बी लायबल टू ए पेनल्टी। क्या होता है? अगर कंपनी में पैसा नहीं है, कंपनी में पैसा नहीं तो प्रमोटर विल बी लायबल, प्रमोटर को अपनी जेब से देना पड़ेगा, ये पर्पस है। ऐसा नहीं कि इनकॉर्पोरेट होने के बाद प्रमोटर कंसेप्ट ही खत्म हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रमोटर का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लास्ट तक रहता है। प्रमोटर्स तो दे आर द की पर्सन, वो तो कोई भी फ्रॉड होगा तो उन्हीं को पकड़ा जाएगा, और किसको पकड़ना है?
तो प्री इनकॉर्पोरेशन में सब इन्वॉल्व रहते हैं उन लोग। अब ये पेनल्टी क्या अलग अलग लगेगी, कंपनी पर अलग, प्रोमोटर डायरेक्टर पर अलग, या एक ही पेनल्टी है? क्या मतलब है इसका? ये तो सिर्फ प्रमोटर और डायरेक्टर्स पर ही है। They are the 42 में लिखा है सर, हम्म 42 10 में लिखा है, the company its promoters and directors shall be liable for a penalty which may extend to the amount raised through private placement. और 2 crore rupees whichever is lower। तो बोलता है सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 11, इफ ए कंपनी मेक्स एन ऑफर और एक्सेप्ट्स मनीज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, the company, its promoters and directors shall be liable for a penalty which may extend to the amount raised through the private placement or 2 crore rupees whichever is lower, and the company shall also refund all monies with interest। देखो subsection 9 is talking of default in filing the return of allotment। So if there is a default in filing the return of allotment, then this is the penalty। अगर कोई contract, if money is, if a company is making an offer or accepting money in contravention of this section 42, then the penalty is different। वो अलग penalty है। ये आ गया उसमें 42 subsection 10 जो आप पूछ रहे थे। If a company makes an offer or accepts monies in contravention of section 42, the company, its promoters and directors shall be liable for a penalty which may extend to कितना है amount raised or rupees 2 crore whichever is lower। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। अच्छा, हु कैन बी हेल्ड लायबल, ये सेक्शन 35 के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन। लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट्स इंक्लूडेड इन द प्रॉस्पेक्टस। तो इफ यू ओपन सेक्शन 35, इट टॉक्स ऑफ civil liability in for misstatements। So who can be held liable for any loss sustained by any person acting on any misstatement included in the prospectus? क्योंकि इस क्वेश्चन में भी ऐसा बोला गया ना, क्वेश्चन में बोला गया कि देयर वर सर्टेन misstatements in the prospectus। बोला ना, prospectus issued by the company included a misstatement regarding the financial position and thereby misleading the persons। तो who can be held liable for any loss sustained? This is answered in section 35। all of the above, sir। एक तो बोलता है डायरेक्टर at the time of issue of prospectus who has authorized himself, then promoter, and then a person who has authorized the issue of prospectus, an expert referred to in subsection 5 of section 26। So all these persons can be held liable। Sir, what will be the liability, sir? In किसका? case ये सिविल लाइबिलिटी में लाइबिलिटी क्या होगा? मिस इन्फॉर्मेशन दिया तो क्या होगा? What will be the liability? You have to approach the court or how is it? एक टाइम कर सकते हैं, ऐसा तो चलो, ऐसा नहीं होगा, ऐसा तो मैं 2 घंटे। Civil liability for misstatements in the prospectus। सर सेक्शन 36 सर इसके बारे में बात कर रहा है। सेक्शन 30 बात करता है। सेक्शन 36 punishment for fraudulently inducing persons to invest money। Oh no, that is 37. 37 is correct, I think. Action by affected persons. Right। So a suit may be filed or any other action may be taken under section 34 or section 35 or section 36 by any persons, group of persons or any association of persons affected by any misleading statement or the inclusion or omission of any matter in the prospectus। So a suit may be filed for this purpose। सेक्शन 447 की भी बात कर रहा है सर यहाँ पे। सेक्शन 447 के अकॉर्डिंग भी जो पनिशमेंट फॉर फ्रॉड है। हाँ हाँ, फिर 447 तो जनरल सेक्शन है, उसमें तो बहुत सारी चीजें हैं। पनिशमेंट, लेकिन ये स्पेसिफिक सेक्शन है, सेक्शन 37, वो कहता है कि सूट फाइल कर सकते हैं।
और उसके बाद कोर्ट देखेगा सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, जो भी होगी वो सजा देगा। ये भी अपना प्रूफ देगा कि इसको कितना लॉस हुआ है। नाउ चैप्टर 4 शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के ऊपर ये आपका सेक्शन 55 से देखते हैं। लेट अस सी फ्रॉम सेक्शन 55 onwards। सेक्शन 55 क्या बोलता है? इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। डेट बोरोड बाय द कंपनी आर 10 lakhs as shown in the balance sheet. In the year 22, the company wants to redeem the existing preference shares out of the profits of the company. The company has adequate profits in this year to redeem the preference shares. Profit of the company is 55 lakhs. ठीक है, और इनको कितने के रिडीम करने हैं? 10 lakhs के। The company also wants to issue fresh preference shares amounting to 10 lakhs divided into 10,000 preference shares of 100 each fully paid up. The company is also considering a proposal to alter its share capital. प्रॉफिट आपका है 55 lakhs का। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? पहला, ए पब्लिक कंपनी में इशू एनी काइंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल या इरिडीमेबल, दोनों इशू कर सकती है क्या? रिडीमेबल या इरिडीमेबल? हाँ नो सर, सिर्फ इरिडीमेबल इशू कर सकते हैं, रिडीमेबल इशू नहीं कर सकते। रिडीमेबल होंगे तो फिर वो इक्विटी रही नहीं ना, वो तो लोन हो गया ना किस्म से। तो दे कैन इशू ओनली इरिडीमेबल। This is given in section 55 subsection 1. No company limited by shares shall after the commencement of this act issue any preference shares which are irredeemable. ठीक है, तो आप जो है सिर्फ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हो, इरिडीमेबल नहीं इशू कर सकते। Second is a company limited by shares may, if so authorized by its articles, issue preference shares which are liable to be redeemed within a period not exceeding 20 years from the date of their issue, subject to such conditions as may be prescribed. ठीक है, provided that a company may issue preference shares for a period exceeding 20 years for infrastructure projects, subject to the redemption of such percentage of shares as may be prescribed on an annual basis at the option of such preference shareholders. तो पहली बात तो ये कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने, रिडीमेबल नहीं इशू कर सकते। दूसरा ये कि आप 20 years तक के लिए ही रिडीमेबल हो सकते हैं नॉर्मली, बट इट कुड, दिस पीरियड कुड एक्सीड इवन 20 years इफ दे आर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। प्रोवाइडेड दैट नो सच शेयर शैल बी रिडीम्ड एक्सेप्ट आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी which would otherwise be available for dividends or out of the proceeds of a fresh issue of shares made for the purpose of such redemption. No such shares shall be redeemed unless they are fully paid. And where such shares are proposed to be redeemed out of profits of the company, there shall out of such profits be transferred a sum equal to the nominal amount of the shares to be redeemed, to be called the capital redemption reserve account. तो जितने का रिडेम्पशन का उतना ही अमाउंट आपको कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में रखना है। तो सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। ए पब्लिक कंपनी में इशू ओनली रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, यस दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ए पब्लिक कंपनी में इशू प्रेफरेंस शेयर्स व्हिच आर लायबल टू रिडीम विद इन ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 20 years फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू, ये भी सही है। ए पब्लिक कंपनी में इशू प्रेफरेंस शेयर्स फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 20 years फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ये भी सही है। So which of this statement is wrong? First statement is wrong. A is wrong. Answer will be A. Redemption of preference shares shall be made only, पहली ऑप्शन तो करेक्ट है, आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी which would otherwise be available for dividend, और दूसरे वाली भी ठीक है, आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ ए फ्रेश इशू। थर्ड वाली ये भी ठीक है, इफ दे आर फुल्ली पेड अप। ठीक है ना, पार्टली पेड अप तो रिडीम हो ही नहीं सकते। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट इज क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। ये कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट कैसे क्रिएट करना है? 55C में लिखा है सर। हाँ यस, ये जो 55 का प्रोवाइजो है, सेकंड प्रोवाइजो का सी है। वेयर सच शेयर्स आर प्रपोज्ड टू बी रिडीम्ड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, देयर शैल आउट ऑफ सच प्रॉफिट्स
बी ट्रांसफर्ड सम इक्वल टू द नॉमिनल अमाउंट, तो प्रॉफिट्स में से ही ट्रांसफर करना है, ठीक है, तो दिस इज ट्रू। The issue of further redeemable preference shares or the redemption of preference shares shall be deemed to be an increase or reduction as the case may be, shall not be deemed to be increase or reduction. ये आपको दिया है एक्सप्लेनेशन में। एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है, सेक्शन 55 में एक्सप्लेनेशन है, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हियरबाय डिक्लेयर्ड that the issue of further redeemable preference shares or the redemption of preference shares under this section shall not be deemed to be an increase or as the case may be a reduction in the share capital of the company, ठीक है, तो आंसर होगा बी। ये सब ध्यान रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कंपनी से, ध्यान रखने के लिए बहुत छोटा छोटी चीज है, बहुत स्मॉल स्मॉल थिंग्स। भाई देखो ऐसा है, इतना तो जो इसमें दिया हुआ उतना तो याद हो ही जाएगा, उतना भी याद हो जाए तो काफी है, फिर उससे आगे जा सकते हैं आप। ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल आपका 61 के अंदर दे रखा। 61 में क्या कहता है, दिस गणपति गौरीसुत मारुति उद्योग लिमिटेड इज ए पब्लिक कंपनी हैविंग इट्स हेड ऑफिस इन मारुति, ठीक है, तो 10 करोड़ डिवाइडेड इनटू 10 लाख शेयर्स ऑफ 100 ईच, ये इक्विटी है, प्रेफरेंस है, डेट्स borrowed by the company are 10 lakhs as shown in the balance sheet. Company is considering a proposal to alter its share capital and thereby wants to make the following changes as regards its share capital. पहला, they want to increase the authorized capital from existing 10 crore divided into 10 lakh shares of 100 each to 20 crore divided into 20 lakh shares of 100 each. पहला तो ये करना चाहते हैं। Second है, the company wants to convert 2 lakh equity shares of ₹100 fully paid into stock of the company, उसको convert करना चाहते हैं स्टॉक में। Third is convert 2 lakh equity shares of 100 each fully paid into shares of larger denomination, ठीक है। The company made a fresh issue of share capital of 50,000 equity shares of 1,000 each. The issue was subscribed and paid except 1,000 equity shares which have not been taken or agreed to be taken by any person, and the company cancelled those shares after following adequate provisions in this regard. Now let us see the questions. So section 61, subsection 1, subsection A. A limited company having a share capital. So this is regarding alteration of share capital. A limited company having a share capital may alter its memorandum in general meeting to increase its authorized share capital by such amount as it thinks expedient. So let us presume that articles of the company have a provision for such alteration. So true. C. The company may alter its authorized share capital by such amount as it thinks expedient. It is given in section 61, subsection 1. तो by such amount as it thinks expedient, ठीक है, तो आंसर will be C. A public company made its general meeting provide for conversion of all or any of its fully paid up shares into stock and reconvert that stock into fully paid up shares. तो शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर सकती है और स्टॉक को शेयर में कन्वर्ट कर सकती है, ये बात सही है गलत है? तो सही है। हाँ True. ठीक है, ये पॉइंट सी दिया हुआ, कन्वर्ट ऑल और एनी ऑफ इट्स फुली पेड शेयर्स इनटू स्टॉक एंड रिकन्वर्ट दैट स्टॉक इनटू फुली पेड होने चाहिए, बस ये बात है। थर्ड है, a company may consolidate and divide all or any of its share capital into shares of a larger amount than its existing shares. तो कंसोलिडेट एंड डिवाइड ये भी सही है, ये पॉइंट नंबर बी के अंदर है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट नो कंसोलिडेशन एंड डिवीजन व्हिच रिजल्ट्स इन चेंज इन द वोटिंग परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डर्स, तो वोटिंग परसेंटेज शेयर नहीं होनी चाहिए। इट शैल टेक इफेक्ट अनलेस इट इज अप्रूव्ड बाय द ट्रिब्यूनल on an application made in the prescribed manner. So this is partially true. So they may consolidate and subdivide, लेकिन उससे वोटिंग परसेंटेज पर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, ये है मतलब।
कैंसिलेशन ऑफ शेयर शैल नॉट बी डीम्ड टू बी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, कैंसिल कर दिए कुछ शेयर्स इन्होंने, True. so it may cancel shares which at the date of the passing of the resolution in that behalf have not been taken or agreed to be taken by any person and diminish the amount of its share capital by the amount of the shares so cancelled, and the cancellation of shares under subsection 1 shall not be deemed to be reduction of share capital. ठीक है, तो cancellation shall not be deemed to be reduction of share capital, so it is true. ये थोड़ा ऑड लग रहा है, नहीं कैंसिल करने के बावजूद भी रिडक्शन होते शेयर कैपिटल नहीं होता है। नहीं देखो ऐसा ना रिडक्ट, कैंसिल कर रहे हैं ना आप शेयर को, हाँ हाँ तो शेयर कैपिटल कैसा कम नहीं होगा? मतलब देखो ऐसा कैंसिल करके रीइश्यू कर रहे हैं तो अलग रिडक्शन में बात ना, है। रिडक्शन के लिए अलग से रूल्स हैं कुछ। रिडक्शन बेसिकली वो क्या, दे वांट टू परचेज बाय बैक ऑफ शेयर्स वगैरह, तो इसीलिए वो रिडक्शन, इसको रिडक्शन नहीं माना उन्होंने। रिडक्शन अगर मान लेंगे ना तो वो वाले प्रोविजन लागू हो जाएंगे रिडक्शन वाले, इसलिए इसको रिडक्शन नहीं माना है। अच्छा, if a company alters its share capital in any manner otherwise than as specified in subsection 1 of section 61, the company and every officer who is in default shall be liable. तो पेनल्टी कितना है इसके ऊपर? क्या हुआ, कोई लफड़ा हो गया क्या? वो सब क्या है, उड़ क्या रही ना प्लीज प्लीज म्यूट म्यूट। 11 बजे से 1 बजे तक कुछ है। ये अरविंद सक्सेना जी आपके यहाँ से कुछ आवाज आ रही है। हाँ जी, तो पेनल्टी कितनी है और ये पेनल्टी कहाँ लिखी हुई है? एक मिनट, ये 61 वाली पेनल्टी लिखी कहाँ हुई है? हाँ जी, ये पेनल्टी लिखी कहाँ है, कौन से सेक्शन में? 61 में तो नहीं लिखी हुई सर। हाँ 61 में तो नहीं है। तो 61 के बाद ही मिलेगी ये कहीं। नहीं सर, दिस इज फॉर जस्ट नॉन कंप्लायंस के सेक्शन 450 एप्लीकेबल होगा क्या सर? सेक्शन 450 may be applicable sir in this case if no penalty is specifically provided. Hello. सेक्शन 450 बोलता है नहीं, ये तो जनरल पेनल्टी हो गई ना, वो गूगल में भी यही लिखा है 450 एप्लीकेबल होगा। है।
गूगल में भी ये लिखा है 450 इज एप्लीकेबल। बट 450 में तो पेनल्टी कितनी आ रही है? 10,000 रुपीज। सेक्शन 61 and section 65 of Companies Act 2013 does not discuss about the penalty. However, the act mentioned about the penalty in section 450 just in case of non-compliance with the rules. The company and the officer in default needs to pay rupees 10,000. Okay. And in case of continuing contravention with a further penalty of 1,000 rupees for each day. हमारा 235 ये आईबीसी की तरह है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? ₹10,000 and in case of continuing with a 1,000 rupees for each day, subject to maximum of 2 lakh. तो none of the above होगा ऑप्शन तो इसका। फिर फिफ्थ का ये ऑप्शन बता रहा है, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। अच्छा, टेबल एफ ऑफ शेड्यूल आई। ये टेबल एफ। चलो इसको ग्रुप में देख लेंगे जो सभी को। इसमें ए आंसर क्यों दिया मेरे को भी देखना पड़ेगा जरा इसको। फिफ्थ का बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स में देखते हैं क्या है। बोनस शेयर्स आपके कौन से सेक्शन में आ रहे हैं? सेक्शन कौन सा है इनका बोनस शेयर्स का? बोनस शेयर्स आपके आते हैं चैप्टर 4 के अंदर, 63 सेक्शन। 63। तो 63 आपका है इशू ऑफ बोनस शेयर्स। इसमें क्या दिया हुआ कि प्रेफरेंस शेयर्स एंड फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। Debts borrowed by the company are 10 lakhs and company paid all the statutory dues of the employees such as contribution to PF gratuity on time. The company has not defaulted in payment of interest or principal in respect of debt securities. The company wants to issue bonus shares to its shareholders. तो कुछ conditions दे रखी हैं for issue of bonus shares. That it can be issued only out of free reserves, securities premium account and capital redemption reserve account. There should not be any default. There should not be any default in respect of statutory dues. And partly paid up are made fully paid up. So a company may issue fully paid up bonus shares to its members in any manner whatsoever out of पहला, ठीक है, free reserves, securities premium, capital redemption, all of the above, ठीक है। तो डी हो जाएगा ऑप्शन, तो all of the above. Issue of bonus shares made by capitalizing reserves created by the revaluation of assets is not permitted. ये तो बात सही है, है ना? प्रोवाइजो में लिखा है, देखो प्रोवाइजो में लिखा है। हाँ, shall be made by capitalizing reserves created by the revaluation. So it is true. No company shall capitalize its profits or reserves for the purpose of issuing fully paid up bonus shares under subsection 1 unless, तो पहली बात ठीक है, authorized by articles, then
सेकंड क्या बोल रहा है? It has been authorized in the general meeting of the company. It is not defaulted in payment of interest or principal. It is not defaulted in respect of statutory dues, and partly paid shares are made fully paid up, and it complies with such conditions as may be prescribed. So all of the above. ये सारी conditions meet होनी चाहिए, तभी ये कर सकते हैं. The bonus share shall not be issued in lieu of dividend. ये बात सही गलत? Yes, this is also true. The bonus share shall not be issued in lieu of dividend. Section 63, subsection 3. Then issue of shares at a discount and sweat equity. So in this case, the company, in order to enhance its share capital, wants to issue its shares at a discount. And the proposal to issue sweat equity shares is also under consideration. So these are the two issues here. A company may at any time issue shares at a discount. Issue of shares at a discount. कौन सा सेक्शन इसको गवर्न कर रहा है? Issue of shares at a discount. हाँ जी, तिवारी जी, युवराज तिवारी जी. Sir, just give me a minute. Section 53, sir, I think. Yes, sir, 53. So prohibition on issue of shares at a discount. So a company may at any time issue shares at a discount. कर सकती है? No, sir. They have to take permission from the relevant authority, I think. क्या बोलता है? Except as provided in section 54, a company shall not issue shares at a discount. Any shares issued by a company at a discount shall be void. So there are provisions which are given in section 54. Sweat equity shares. हाँ. Any shares issued by a company at a discount shall be void. There are certain conditions under which a company may issue shares at a discount to its creditors. ठीक है? ये आपका section 53 subsection 2A में दिया हुआ है. क्या बोलता है? Notwithstanding anything contained in subsection 1 and 2, a company may issue shares at a discount to its creditors when its debt is converted into shares in pursuance of any statutory resolution plan or debt restructuring scheme in accordance with any guidelines or directions or regulations specified by RBI. So basically, if there is some restructuring plan or statutory resolution plan, then shares may be issued at a discount to the creditors. Otherwise, shares cannot be issued at a discount. And what is the penalty for contravention? This is given in section 53, subsection 3. Where any company fails to comply with the provisions of this section, such company and every officer who is in, shares can be issued at a discount only in pursuance of a statutory resolution plan or debt restructuring scheme. Otherwise, it is void. A. Achha. Who is in default shall be liable to penalty which may extend to an amount equal to the amount raised through the issue of shares at a discount or 5 lakh rupees, whichever is less. And the company shall also be liable to refund all monies received with interest at the rate of 12% per annum. So the penalty is the amount raised or 5 lakh rupees, whichever is less. ठीक है?
तो ये हो जाएगा आंसर इसको। सर ये स्वेट इक्विटी शेयर्स मतलब क्या है सर? Sweat equity shares basically they are issued to the employees of the company who have toiled for the company. Say normally they are issued to, say, if the company is making profits, so they may, because suppose the shares of the company are listed at 500 rupees, so they may be issued for free or they may issue them say at 100 rupees. So these are basically rewards to the employees for their hard work. Like ESOP, sir, like ESOP. Right. So notwithstanding anything contained in section 53, a company may issue sweat equity shares of a class of shares already issued if certain conditions are satisfied. The issue is authorized by a special resolution. First is it should be authorized by a special resolution. The resolution specifies the number of shares, the current market price, consideration if any. They may be issued for free also. And the class or classes of directors or employees to whom such equity shares are to be issued. Where the equity shares of a company are listed on a recognized stock exchange, the sweat equity shares are issued in accordance with the regulations made by SEBI. And if they are not so listed, the sweat equity shares are issued in accordance with such rules as may be prescribed. So these are the conditions for issue. First of all, special resolution. Then the resolution should specify the number of shares, current market price, consideration if any, and the class or classes of directors or employees to whom such equity shares are to be issued, besides following the SEBI regulations or rules. Debentures. A company may issue debentures. डिबेंचर्स के लिए आपका सेक्शन कौन सा है? सेवेंटी वन। yes. So a company may issue debentures, पहला, only after passing a special resolution at a general meeting. A company may issue debentures with an option to convert such debentures into shares, either wholly or partly at the time of redemption. ठीक है? Provided that the issue of debentures with an option to convert such debentures into shares, wholly or partly, shall be approved by a special resolution passed at a general meeting. No company shall issue any debentures carrying any voting rights. So debentures cannot have any voting rights. Secured debentures may be issued by a company subject to such terms and conditions as may be prescribed. Where debentures are issued by a company under this section, the company shall create a debenture redemption reserve account out of the profits of the company. So the company can issue debentures with an option to convert such debentures into shares, either wholly or partly at the time of redemption. Provided that the issue of debentures with an option to convert such debentures into shares, wholly or partly, shall be approved by special resolution passed at a general meeting. सेकेंड इज नो नीड टू पास सच ए रेजोल्यूशन. ये वाला ये ठीक है या नहीं? क्या है वो? क्या कहता है वो? ये कहता है कि दिस स्पेशल रेजोल्यूशन इज नेसेसरी only when there is an option to convert such debentures into shares, wholly or partly. So if the debentures are not convertible, then no need to pass such a resolution. तो आंसर इसका सी हो जाएगा. फर्स्ट का आंसर सी हो जाएगा. अगर आपने कन्वर्टेबल इशू करने हैं तो भी रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत है. अगर कन्वर्टेबल नहीं है फिर पास करने की जरूरत नहीं है स्पेशल रेजोल्यूशन. ये मतलब ए कंपनी कैन नॉट इशू एनी डिबेंचर्स दैट कैरीज वोटिंग राइट्स. बिल्कुल सही है. नो कंपनी शैल इशू एनी डिबेंचर्स कैरिंग एनी वोटिंग राइट्स. 71 सबसेक्शन 2. इसके नीचे आप सेक्शन भी लिख सकते हैं. सेक्शन में लिखा हुआ था, पता नहीं क्यों इसमें नहीं नजर आ रहा, या बाद में लिखा होगा.
द कंपनी शैल क्रिएट ए कैपिटल, ये इसमें क्या क्रिएट करेगी, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, ठीक है, आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। A contract with a company to take up and pay for any debentures of the company may be enforced by a decree for specific performance. This is given in section 71, subsection 12. A contract with the company to take up and pay for any debentures of the company may be enforced by a decree for specific performance. So this is true. Section 71, subsection 12. Reduction of share capital. Reduction of share capital में देख लेते हैं थोड़ा. A company limited by guarantee cannot reduce its share capital under any circumstances. ये रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कौन सा सेक्शन है हमारा? सर। 66 रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। हाँ जी, तो एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी ये इशू कर सकती है या नहीं कर सकती? (66) subsection 1 says, subject to confirmation by tribunal on an application by the company, a company limited by shares or limited by guarantee and having a share capital by a special resolution reduce the share capital. So even a company limited by guarantee can reduce. So this statement is false. A company limited by shares and having a share capital may reduce its share capital. कैसे करना है इसको? By a special resolution and by obtaining the confirmation of the tribunal on an application by the company. So both 66 subsection 1. ठीक है? By Both. obtaining the confirmation of the tribunal. हाँ. A company cannot reduce its share capital if कुछ conditions हैं. No reduction shall be made if the company is in arrears in the repayment of any deposits accepted by it, Yes. or after the commencement of this act, or the interest payable thereon. Second is tribunal has not granted the permission. तीनों होगा नहीं, ये होगा। Provided that no application for reduction shall be sanctioned by the tribunal unless the accounting treatment proposed by the company for such reduction is in conformity with the accounting standards. All of the above, sir. और तीसरा पॉइंट है, the company has not submitted a certificate is in conformity, and a certificate to that effect by the company's auditor has been filed by the tribunal. तो ये सारी चीजें इसको satisfy करनी है अगर if they want to reduce its share capital. Cancellation of any paid up share capital of the company which is lost or is unrepresented by the available assets of the company do not amount to reduction of share capital. Cancellation of any paid up share capital which is lost or is unrepresented by the available assets of the company. Yes, true, sir. True. हाँ, 66 का 1 का B आ जाएगा आपका. Yeah. Either with or without extinguishing or reducing liability or any of its shares, cancel any paid up share capital which is lost or is unrepresented by available assets.
or pay off any paid up share capital which is in excess of the wants of the company. What shall be the amount of reduction of share capital in the above case study? इसमें रिडक्शन कितनी होगी देख लेते हैं एक बार. रिडक्शन, ये क्वेश्चन है हमारा. रिडक्शन कितनी कर सकते हैं? पहला तो ये है कि ये जो 50,000 शेयर्स हैं, 50,000 शेयर्स है ना आपके, विच आर फुली पेड अप बट विच मे नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय द अवेलेबल एसेट्स ऑफ द कंपनी और इज कंसिडर्ड एज लॉस. तो 50,000 इंटू 100, एक तो ये हो गया. और भी इसके अलावा कोई है क्या? तो 50 लाख तो ये हो गया. बस, और तो कुछ नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से. तो आंसर इसमें 50 लाख होना चाहिए. वो कह रहा है इफ कैंसिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल अमाउंट्स टू रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल बाय द कंपनी, फिर एफ आंसर होगा. देन आंसर इज बी, अदरवाइज ए. अच्छा, पहला वाला भी है ना. रिड्यूस इट्स शेयर कैपिटल बाय द अमाउंट विच इज अनपेड, दो कॉल्ड अप. अभी अनपेड अमाउंट कौन सा है? 20,000 unpaid है sir. That is not fully paid up. 2,27 rupees. हाँ, ये आपका 20 लाख हो जाएगा. 2 लाख इक्विटी शेयर है ना. हाँ. 2 लाख का आपका 10 रुपीज अनपेड है ना. 90 रुपीज पेड अप है ना. तो 20 लाख ये हो गया. Cancel any paid up share capital which is lost or is unrepresented by available assets. तो इसमें आंसर दिया if cancellation of share capital tantamounts to reduction of share capital, then answer is B, otherwise A. और ये 20 लाख और 50 लाख दो हैं इसमें. Acceptance of deposits by companies. So Shiv Shakti Enterprises Limited is a public company engaged in the business of manufacturing medicines with its set offices in Bangalore. The company is an authorized share capital of 10 crore divided into 10 lakh shares of 100 each. The company decided to raise funds from its members by accepting deposits from them. A resolution authorizing this issue of deposits to its members passed at a general meeting of the company. The company followed the relevant provisions in this regard regarding issues of a circular regarding financial position, credit rating, total number of depositors, filing of the circular copy to the registrar, certifying that the company had not committed any default in the repayment of deposits accepted either before or after the commencement of this act, or payment of interest on such deposits, provided security for the repayment of amount of deposits, and opened a separate bank account to be called Deposit Repayment Reserve Account in a scheduled bank for this purpose. The company also ensured that the sum deposited in this account shall not be less than 20% of the amount of its deposits maturing during the following financial year on or before the 30th day of April each year. Now answer this. The provisions of section 73
Now they have taken us to section 73. Section 73 में क्या बोलता है? Prohibition and acceptance of deposits. तो किस किस पर अप्लाई नहीं होते? प्रोवाइजो में दिया हुआ, provided that nothing in this subsection shall apply to a banking company and non-banking financial companies as defined in RBI Act and to such other company as the central government may after consultation with the RBI specify in this bill. ठीक है? A company may, subject to the passing of a resolution in general meeting and subject to such rules as may be prescribed in consultation with the Reserve Bank of India, accept deposits from its members on such terms and conditions, including the provision of security, if any, or for the repayment of such deposits with interest as may be agreed between the company and its members. Pehla, issuance of a circular to its members, including their in statement, credit rating वगैरह, filing a copy of the circular along with such statement with the registrar within 30 days. Depositing on or before the 30th day is sum each year is sum which shall not be less than 20% of the amount of deposits maturing during the following financial year. Then there should not be any default. तो किस किस पर अप्लाई नहीं होते ये? एक तो बैंकिंग कंपनी पर अप्लाई नहीं होंगे, फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी पर अप्लाई नहीं होंगे, एज द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और तीसरा हो गया सच कंपनी एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाइड. अच्छा, डी वाला पॉइंट क्या है? आंसर जी होना चाहिए इसका मेरे हिसाब से, तो क्योंकि ए बी और सी ही इसमें करेक्ट है, डी इसने ऐसे डाल दिया लगता है. आंसर इसका ई है, ऑल ऑफ द अबव. तो ऑल ऑफ द अबव कैसे? ए पब्लिक कंपनी, ये कहां पर लिखा हुआ है? Having such net worth or turnover as may be prescribed and subject to such rules as the central government may in consultation with RBI prescribe. Subject to the passing of a resolution. Where a company accepts any deposits in contravention of the provisions of section 73 or section 76 or fails to repay the deposit or part thereof or any interest due thereon within the time or any interest due thereon within the time specified under section 73 or section 76, the company shall be punishable. Punishment कितनी है? This is given in section 74, subsection 3. Which shall not be less than 1 crore rupees, but which may extend to 10 crore rupees. And every officer of the company who is in default shall be punishable with imprisonment, which may extend to 7 years, or with fine, which shall not be less than
ये किसके ऊपर पूछ रहा है? ये कंपनी के ऊपर। कंपनी कंपनी का पनिशमेंट है 1 करोड़ टू 10 करोड़। तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इसमें, फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 1 करोड़ रुपीज बट विच में एक्सटेंड टू 10 करोड़ रुपीज। अच्छा, ऑफिसर, ऑफिसर के ऊपर कितना पनिशमेंट है? ऑफिसर के ऊपर पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट है एक तो, विच में एक्सटेंड टू 7 years और विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 25 लाख रुपीज टू 2 करोड़ रुपीज। ठीक है ना, तो बहुत ए एंड सी हो जाएगा। The deposit repayment reserve account shall not be utilized by the company for any purpose other than repayment of deposits. This is given in section 73 subsection 5. Section 73 subsection 5 says that the deposit repayment reserve account referred to in clause C shall not be used by the company for any purpose other than repayment of deposits. ये आपको रिजर्व पे रखना है। रिजर्व में कितना रखना है? इसमें 20% of the amount of its deposits maturing during the following year, following financial year, and kept in a scheduled bank in a separate bank account to be called deposit repayment reserve. ये जो सर्कुलर है, सर्कुलर में क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी है? सर्कुलर की इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है सेक्शन 73 टू ए के अंदर। इशुएंस ऑफ ए सर्कुलर टू इट्स मेंबर्स इंक्लूडिंग देयर स्टेटमेंट शोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन्ड, टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स and the amount due towards deposits in respect of any previous deposits accepted by the company, and such other particulars in such form and manner as may be prescribed. So all these conditions are to be, all these things are to be given in this circular. The company inviting deposits from its members oblique public shall file a copy of the circular including the relevant statement therein within कितने दिन के अंदर करना है? 30 days के अंदर, विद इन 30 days बिफोर द डेट ऑफ इशू ऑफ द सर्कुलर. सो दिस इज गिवन इन सेक्शन 73 2B. The amount to be deposited in reserve payment account should be deposited on or before, on or before कितना है? 30th day of April. ठीक है, तो 30th day of April ये हो जाएगा इसका आंसर. The amount to be deposited in deposit shall not be less than, कितना परसेंट है इसमें? 20%. रजिस्ट्रेशन एंड चार्ज. ऐसे ही करते करते आपको पूरा पूरा कंपनी एक्ट पढ़ लेना है. देखो पूरा कई बार क्या होता है, क्लास में तो नहीं इतना डिस्कस हो सकता, लेकिन आप इसको पढ़ लोगे तो कुछ आइडिया तो आपको हो जाएगा. एक किस्म से सेक्शन पढ़ने का तरीका है ये, है ना. तो बाकी आपके ऊपर, अगर आप बेरख से पढ़ना चाहो वहां से पढ़ लो. क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पढ़ोगे थोड़ा जल्दी याद हो जाएगा. 2-4 बारी आप करोगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा. ये ऐसी बात नहीं, कम से कम इसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछ लेगा तो इतना तो ध्यान में रहेगा आपको. और हर एक चैप्टर के हमने क्वेश्चन बना रखे हैं इस तरह से. तो काफी लंबी चौड़ी पीपीटी है ये, तो इसमें आप इस तरह से कर सकते. तो आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं. थैंक यू सर. चैट में क्या, चैट में कुछ आया है? अच्छा वो इसी, ठीक. ओके ओके जी, गुड नाइट.